Good afternoon, everyone. Can someone tell me now whether my voice is clearly audible and this screen is clearly visible or not? आवाज सही आ रही है? हेलो, कोई बताएगा आवाज सही आ रही है कि नहीं आ रही? ओके, ठीक है, थैंक यू। तो आज का हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है? दिस विल बी टुडेज टॉपिक। और माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे कि हम लोग कल पढ़े थे, ठीक है? तो आप में से किसको याद है व्हाट डू वी कॉल माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स हम किसे कहते हैं, या माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? डज एनीवन रिमेंबर? या इकोनॉमिक्स का ही मतलब क्या है? हाउ मेनी यू गाइस ऑफ रिमेंबर दिस? व्हाट डू वी मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स? So what do we call economics? Economics is the science. It actually studies how societies take decision with respect to production, distribution and consumption of scarce resources. This is what economics definition is. When we talk about micro, okay, we talk about individual level economics, firm level economics, entity level economics, ठीक है? और जब हम लोग मैक्रो की बात करते हैं तो हम लोग पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं कि पूरी इंडियन इकोनॉमी को अगर हम लोग डिस्कस करना चाहें तो दैट विल बी कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? तो आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में व्हाट वी विल स्टडी टुडे, आज हम लोग बात करेंगे कि मार्केट फोर्सेस को कौन इन्फ्लुएंस करता है, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है? थोड़ा डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड, ठीक है? फिर डिमांड कर्व के बारे में पढ़ेंगे, हाउ डज दीज फैक्टर्स लीड्स टू शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ये सब भी पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद सेम थिंग जो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं हम लोग सप्लाई के केस में पढ़ेंगे। दैट मीन्स सब व्हाट डू वी मीन बाय सप्लाई कर्व, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई कर्व, एंड लास्टली इन फैक्टर्स की वजह से सप्लाई कर्व आउटवर्ड शिफ्ट होता है या इनवर्ड शिफ्ट होता है, कैसे शिफ्ट होता है, वी विल डिस्कस। और लास्टली वी विल सी डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम, ठीक है? दिस विल बी टुडेज एजेंडा दैट वी विल ट्राई टू फिनिश टुडे, और बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा, इसमें कुछ खतरनाक तो है नहीं, ठीक है? सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं और आप लोगों को समझ बड़े जल्दी आ जाएंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। वजीर said people choose how to use their resources, ये हो गया इकोनॉमिक्स, ठीक है? डीलिंग विद सिंगल यूनिट फ्रॉम हाउस होल्ड, यस माइक्रो इकोनॉमिक्स, वेरी गुड नाथिया, ठीक है? तो सबसे पहले किसी भी मार्केट में, ठीक है, जैसे कोई भी अगर आप मार्केट देख लो, लेट्स से स्टॉक मार्केट एफवीसी, ठीक है? अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक ले लो, टेल मी एनी स्टॉक, कोई भी एक स्टॉक बताइए आप लोग, विच स्टॉक आर यू मोर इंटरेस्टेड इन? अगर आप डीमैट में इन्वेस्टिंग करेंगे तो आप कौन सा स्टॉक खरीदेंगे? एनीवन?
NSE BSE तो एक्सचेंज है, these are exchange, ठीक है, where stocks are listed. It's a platform where buyers and sellers, buy or sell these stocks. Stocks means, अच्छा वजीर ने बता दिया अडानी पावर चाहिए, ठीक है, ठीक है। वजीर अडानी पावर का प्राइस क्या चल रहा है अभी? व्हाट इज द प्राइस? लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अडानी पावर मस्ट बी अराउंड 300 मान लेते हैं, ठीक है। तो इनिशियली जब अडानी पावर लिस्ट हुआ, उसके बाद फिर वो यूफोरिया आया, फिर अचानक से हिंडनबर्ग रिपोर्ट, और उसके बाद से अभी रिकवरी आना स्टार्ट हो गई है। तो लेट्स से दिस इज राइट नाउ द प्राइस ऑफ अडानी पावर, ठीक है, टुडे। Why do you think this price is actually changing? Why do you think this price is actually going up and down and up? What exactly are influencing these stock prices? Can anybody tell me? ये स्टॉक के प्राइस ऊपर नीचे क्यों हो रहे हैं? ये स्टॉक का प्राइस अगर बढ़ता है तो लोग उसको बाय कर रहे हैं, बेसिकली दे आर पुटिंग देयर मनी एंड दे आर बाइंग द स्टॉक्स, ठीक है, जिसकी वजह से वो महंगा हो रहा है क्योंकि इसकी सप्लाई भी कम हो रही है। एग्जैक्टली तो डिमांड एंड सप्लाई is the most fundamental aspect of market forces, ठीक है, फंडामेंटल मार्केट फोर्सेस, ठीक है। अब फंडामेंटल मार्केट फोर्सेस हम किसे कहते हैं? These things are fundamental. मार्केट के मूव होने के लिए डिमांड एंड सप्लाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज प्राइस में कोई चेंज आपको दिखेगा ही नहीं। इफ देयर इज नो डिमांड, देयर इज नो सप्लाई, ठीक है, देन देयर इज नो मार्केट ऑल्सो। अगर इसकी कोई डिमांड है और ना ही इसकी कोई सप्लाई है, फिर ना अडानी पावर रहा और ना मार्केट का कोई रेलेवेंस रहा। दैट मीन्स इफ देयर इज नो डिमांड, नो सप्लाई, then if there is no supply, there is no stock, and if there is no stock, no demand, and let's say this is the only stock, then there is no relevance for market as well, है ना? So that's why we call these two things as the most fundamental forces of the market, ठीक है, and that's why it is essential for us to read these things, read about these things, because they have, whether you go at the micro level or whether you go at the macro level, ठीक है, you have to understand the concepts of demand and supply. You have to understand how does these demand, affects or get affected by different forces. And only when you understand these forces and how does they impact demand and supply, then only you can do a lot of questions that can come in any exam, be it your university exam, be it your competitive examination. If your fundamentals are clear, you can clear any examination. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद डिमांड। So first of all, let's understand what's the fundamental law of demand, through which if we understand this law, we can easily make demand curve. So what is this law? It says whenever there is an increase in price, the quantity demanded reduces, ठीक है, and obviously by keeping other factors constant.
इफ आई डोंट कीप दिस अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, आप तो मेरा गला पकड़ लोगे, आप कहोगे कि एप्पल के प्राइसेस तो बढ़ते हैं तब भी उसकी डिमांड बढ़ती है, तो आप ये क्या बता रहे हो? ठीक है, बट दैट्स अ डिफरेंट केस सिनेरियो. दिस इज द बेसिक लॉ कि कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, अगर केवल प्राइस और क्वांटिटी के बीच में अगर हम लोग डील करें तो क्या रिलेशनशिप आता है डिमांड का. तो दिस इज व्हाट दैट लॉ सेज कि आप अगर किसी भी चीज की प्राइस बढ़ाओगे तो उसकी क्वांटिटी की डिमांड रिड्यूस हो जाएगी. बेसिकली अगर प्याज के दाम बढ़ गए हैं तो लोग प्याज खाना थोड़ा कम कर देंगे, नहीं खरीदेंगे उतनी प्याज. थोड़ा सा प्याज खरीद के थोड़ा आज मतलब परहेज कर लेते हैं एक हफ्ता, जैसे प्राइस घटेगी तब खरीद लेंगे. ठीक है, तो ये बेसिक डिमांड लॉ एक्सप्लेन करता है. हाय कार्तिक, हाउ आर यू? Demand and supply constant, supply low, demand will increase. Yes, supply अभी we are only talking about demand, so don't confuse it with supply. ठीक है, अभी supply के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. We are talking about demand, और demand कहाँ से आता है? Population से आता है. ठीक है, we are talking about demand, we are talking about price. There is no mention of supply, so don't get confused with these things. Supply is a production aspect, demand is a consumer aspect. डिमांड कंज्यूमर से बनता है, प्रोडक्शन कंपनीज मतलब जो सप्लाई है वो प्रोडक्शन से डिपेंडेंट है. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कार्तिक. डोंट गेट कंफ्यूज विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई एंड डिमांड एंड डोंट रिलेट इट बिकॉज दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट. ऑब्वियसली दे हैव अ रिलेशनशिप, बट व्हेन यू स्टडी डिमांड, द रिलेशनशिप यू हैव टू स्टडी इज डिमांड एंड प्राइस. Is this clear? Okay, so now you guys have already understood this. Now let's try to plot a graph. ठीक है, let's take an example of Adani Power only. ये अडानी पावर छोड़ो, हाँ अडानी पावर ले लेते हैं. Let's take example of onions. ठीक है, तो as per the demand law it says, and this is your price, this is your quantity. ठीक है, let's take an example of कि at 5 rupees 5 quantity you are ready to purchase, but let's say the price actually increased to this place 7 rupees, then obviously you will not buy 5. ठीक है, your budget is only 25 rupees, so in 25 rupees how many onions you can buy? 25 by 7, somewhat around 3 onions you will buy because you have that much budget. So this will be your curve, and if I say that it is increased to 10 rupees, then you will say that only 2.5 or let's say 2 onions you will buy. So 2, but if that price is reduced to 2.5, okay, then you will say that now I can buy from 5 rupees to, if you divide it 25 by 2.5, your budget to price of onion, then you can buy now 10 onions. Then you will say at 2.5 I can buy 10 onions. Then this will become your demand curve. ठीक है, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा ना? दिखा दे रहा? हाँ दिख रहा है. ठीक है, ओके. Yes, correct. Inverse relationship between price and quantity. ठीक है, तो I hope you understand the relationship between price and quantity. Any confusion with respect to this?
अब इस पे आते हैं कि व्हाट आर वेरियस फैक्टर्स दैट एक्चुअली इन्फ्लुएंस डिमांड अदर देन प्राइस। ठीक है, आपने ये तो देख लिया कि प्राइस के बेसिस पे क्वांटिटी डिमांडेड कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, यू सीन दैट हाउ बिकॉज ऑफ प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड इज एक्चुअली चेंजिंग। ठीक है, बट व्हाट अबाउट अदर फैक्टर्स? What factors are there because of which quantity demanded gets changed? Okay, so one of the factors is size of the market. Okay, and now give me an example. Now I'll give you an example. Now you guys tell me at which place the price of onion will be higher or lower. So one place is, let's say, Kulera village. Okay, and another place is, let's say, Jaipur city. Where do you think the price of onion will be higher? Anyone? And why do you think Jaipur city will have higher price? सिंपल डिमांड वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जयपुर सिटी में लोग ज्यादा हैं कंपेयर टू फुलेरा विलेज। when people are more, that consecutive quantity demanded is more. ठीक है, और अगर keeping everything constant and when we are only talking about quantity and price, that quantity demanded ज्यादा है, price भी naturally। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। If the average income is more, then how does it impact the demand? Yes, more income leads to more demand। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक अलग टाइप का फोर्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये एक और फैक्टर है जिसकी वजह से डिमांड पर अंतर पड़ा है। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर एंड टाइपराइटर। ठीक है, अगर टाइपिंग की बात करें तो आप टाइप कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो टाइप इन टाइपराइटर। बट व्हाट इफ द प्राइस ऑफ कंप्यूटर एक्चुअली रिड्यूसेस? ठीक है, then how will it impact the demand for typewriter? Will it reduce the demand or will it increase the demand? Anyone?
Yes, naturally it will increase. Sorry, टाइपराइटर की डिमांड डिक्रीज करेगी, ठीक है, बिकॉज नाउ यू कैन गेट अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी एट अ लो प्राइस, देन व्हाई वुड यू नीड टाइपराइटर, ठीक है। तो इसमें वो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का फिर रिलेशनशिप चला जाएगा, बिकॉज नाउ दिस इज अफेक्टेड बाय अ डिफरेंट फैक्टर, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. Now you guys tell me what will happen if, and another factor is tastes and preferences, ठीक है। इसमें आईफोन वाले जितने हैं ये उनसे रिलेट करेगा, ठीक है। हाउ विल यू एक्सप्लेन iPhone despite its price increasing, the quantity demanded either remains the same and sometimes increases also. This is only because of the tastes and preferences of consumer, ठीक है। Next thing is special circumstances, ठीक है। अब स्पेशल सर्कमस्टांसेस का इफ वी टेक एन एग्जांपल with respect to demand for umbrella. Now you guys tell me whether the demand for umbrella throughout the year, throughout the year, will it be more in Rajasthan or will it be more in Meghalaya? Yes, demand more in Meghalaya. Why? Because here most of the time rains are there compared to Rajasthan. So naturally the quantity and price relationship is irrelevant here. Now we have understood how these factors influence the demand, okay, and how these factors actually change. But how can we represent it on the graph? Because naturally the questions in the exam, if it will come like this, that it will come like that if the income of every person has increased in the economy, then it will shift the demand curve, which is like this, to where? Towards right or towards left? Batao? So the correct answer is it will shift towards right. And why do you think this is? I will explain it to you. Okay? Because you said for every person income is higher. Okay? So that means let's assume 5 rupees, 5 quantity onion. Let's take the same example of onion. Okay? But if every person, and the budget for that person was 25 rupees, but let's say you have increased the income of this person and you have increased it to 50 rupees. ठीक है, इनकम बढ़ गई उस बंदे की. अब now that same person can buy 10 onions at this 5 rupees. ठीक है, so if this is quantity and this is price, then at this same price he can buy 10 onions and that point will lie here. ठीक है, and now you can increase the price and other things. Let's say if you increase the price to 10, okay, and that person only initially at 25 rupees he could buy only 2 onions in the previous case, but now what happens? Now he can buy, divide by 10, 5 onions. Okay, so at this price now he can buy
5 onions. So whenever there is an income increase, the overall demand increase and the demand curve shifts to right. ठीक है, तो थंब रूल आप ऐसा बना लो, इंक्रीज है तो राइट है, डिक्रीज है तो लेफ्ट है. This will help you in remembering these things. Is this clear? Any confusion here to anyone? अगर कोई confusion है तो please ask. I can explain it again. Okay. So this was what demand is all about. Demand and factors affecting demand. ठीक है? And so we saw how relationship of demand with quantity. We saw how demand was impacted by other factors, and we saw how these factors actually shifted the demand curve. Okay. Now same thing we will discuss in case of supply. So first of all, we have to understand what's the supply's fundamental law. है ना, ये तो पता होना चाहिए. What is the fundamental law of supply? Anyone? What do you think is the fundamental law of supply? As I've explained it to you earlier, that demand is usually a function of consumption. ठीक है, तो demand consumer से related है, but supply is related to production. Obviously you will relate it with price. Price से ही हम लोग का वो बनेगा. We will establish a relationship between price and quantity produced. ठीक है, so a supply law actually establishes a relationship between the price of the commodity and the quantity the factory or the business person wants to produce at that particular price. ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सप्लाई कर्व पे हम लोग अगर प्लॉट करेंगे, तो लेट्स से दिस इज सप्लाई and this is price, and if you want to make let's say a car, ठीक है, एक बात बताइए, क्या आप 1 लाख पर 1 लाख की प्राइस पे कोई कार सप्लाई करेंगे मार्केट पे? एनीवन? 1 लाख पे चलो टाटा is ready to supply, but let's say can you supply any car at 50,000 rupees in the market? है ना, तो ऑब्वियसली इससे आपको क्या पता लगता है कि सप्लाई कर्व एक इनिशियल प्राइस पर स्टार्ट होगा. ठीक है, जीरो से स्टार्ट नहीं होगा. ठीक है, बिकॉज इन ऑर्डर, देखो किसी को शौक में सप्लाई नहीं करनी है, किसी को शौक में प्रोडक्शन नहीं करना. कोई भी बिजनेसमैन शौक में नहीं कर रहा है कि उसको मजा आ रहा है चलो कार प्रोड्यूस कर देते हैं. एवरीबडी इज सप्लाइंग कमोडिटी इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट. ठीक है, तो वो एटलीस्ट एक बेसिक प्राइस पे तो निकालेगा कि जिसपे कुछ तो प्रॉफिट हो. ठीक है, तो मान लीजिए उसने 1 लाख पर निकाला और इतनी क्वांटिटी लोग डिमांड कर रहे वो, एंड ही कुड सप्लाई, लेट्स से उसकी फैक्ट्री का साइज इतना है जिसमें 1 लाख की प्रॉफिट पर, ठीक है, 10 कार ही प्रोड्यूस कर सकता है. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर. बट इफ the market allows him to sell the car at let's say 2 lakh rupees, ठीक है, then naturally उसके पास प्रॉफिट ज्यादा आएंगे, तो he could expand this factory, he could hire more person, and then he could produce more
isn't it? So quantity now produced will be higher. Similarly, if the price again is increased, let's say to 3 lakh rupees, then the profits are more and the quantity will also be higher. बट ऐसे करते करते अब ये ग्राफ आपका ऐसे नहीं जाएगा. अब ऐसे सीधे स्ट्रेट क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है. बट डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है कि जितना आप एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव फैसिलिटी ऐड करेंगे, जरूरी नहीं कि उतनी ही प्रोडक्शन ऐड हो जाए, ठीक है. एक पॉइंट के बाद चाहे आप कितना भी प्राइस बढ़ा लें, ठीक है, फिर वो क्वांटिटी डिमांडेड ही कमी हो जाएगी, तो फिर आप सप्लाई करने का मतलब ही नहीं है. आप सप्लाई तो कर रहे हैं, अगर वो बिके ही ना तो फिर आपके सप्लाई करने का मतलब क्या है? तो फिर वो ऐसे चला जाता है ग्राफ, लाइक दिस, ठीक है. अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ इज दिस, ठीक है. सो दिस इज सप्लाई कर्व वी आर टॉकिंग अबाउट. एनी कंफ्यूजन हियर टू एनीवन? किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके. अब बात करते हैं फैक्टर्स की. देखो, प्राइस और कमोड और क्वांटिटी सप्लाइड का रिलेशनशिप तो वी अंडरस्टूड. जैसे जैसे प्राइस बढ़ाएंगे क्वांटिटी भी बढ़ेगी, ठीक है. बट अदर फैक्टर्स, जस्ट लाइक हाउ वी डिस्कस्ड इन डिमांड, दैट अदर फैक्टर्स, उन्होंने तो डिमांड कर्व शिफ्ट कर दिया था, ठीक है. तो वी विल टॉक अबाउट दोज अदर फैक्टर्स जिनकी वजह से सप्लाई कर्व विल ऑल्सो बी शिफ्टेड, ठीक है. तो वन ऑफ द बेसिक फैक्टर इज ऑब्वियसली टू प्रोड्यूस एनी कमोडिटी, ठीक है. व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट? योर इनपुट्स, इनपुट कॉस्ट, है ना. तो एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पेट्रोल प्राइसेस. या पेट्रोल प्राइसेस छोड़िए, आप इसको एग्जांपल लीजिए, कार का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कार and now the input cost, basically engine manufacturing cost has increased, ठीक है. So naturally the car cost will also increase. Now if the car cost will increase, now you guys tell me whether the supply curve which was like this, अब ये कहाँ शिफ्ट होगा, आगे होगा या नीचे होगा, ठीक है. और इसको आप करने के लिए आप सिंपल से, जैसे हम लोगों ने डिमांड में यूज किया था, सेम प्राइस पर कितनी क्वांटिटी उस ग्राफ पर हम लोग प्लॉट कर सकते थे, उस हिसाब से आप सोचें. तो एक बेसिक एग्जांपल आप ले लो, ठीक है, कि 5 लाख की गाड़ी और आप क्वांटिटी कितनी सप्लाई कर रहे थे? आप क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे, लेट्स से 50 क्वांटिटी आप सप्लाई कर रहे थे, ठीक है. अब इनपुट कॉस्ट अगर बढ़ गया है, ठीक है, तो आपकी जो 50 क्वांटिटी थी उसका प्राइस सेम तो रह नहीं सकता, है ना. उसका प्राइस भी बढ़ेगा. तो आप बताइए कर्व कहाँ शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट? Yes, it is practically possible if you do it consistently, ठीक है.
it will shift towards left. And why is it so? अब वो सेम, अगर वो आपको क्वांटिटी सेम डिलीवर करनी है तो आपको प्राइस भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ चुका है ना. एंड इफ यू हैव टू डिलीवर द सेम अमाउंट ऑफ कार्स, you have to increase the price in order to make your venture profitable, because the input cost has increased. So that's why the curve will be shifting to leftwards. Now take a different case scenario. Let's take another factor. Let's take a factor of technological advancement. And whenever a technological advancement is there, what happens to the production process? Anyone? Whenever there is a technological advancement, what happens to the production process? Let's take an example that Maruti Suzuki previously used to, use a lot of workers to do manual work, but now machines are there, they can do a lot of work at a less time. So naturally the input cost reduces or increases? Anyone? Yes, low production cost. Okay. So whenever there's a low production cost, now you guys tell me, how will the graph shift because of technological advancement? Will it go to left or will it go to right? Yes, correct. At the same price, supply will increase. So अब 5 पर, ठीक है, previously you could supply at 50, but now because of technological advancement you could supply 75. ठीक है, so that will come around here, and this will be like this. Yes, and all of you are very much right. Okay, so I hope you understand how does this supply and demand curve works and how can you utilize it in terms of shifting. Okay, if I pose you any question, will you be able to tell whether this demand curve or supply curve will shift to left or right? Anyone or everyone? I am explaining in English also. Just tell me what you didn't understand. Okay, I will again explain it to you. Okay. Next policy is, let's say, next factor affecting supply of any commodity. It is government policies. Okay. So let's take an example of MSP by government. Okay. And let's take an example of MSP for if government has increased MSP for millets. Now, can you tell me how will it impact the supply of wheat? Anyone? And let's assume this was your wheat supply curve. Now tell me, because of increased millets MSP, how does the supply curve of wheat will change? Will it go leftwards or will it go rightwards?
I'm asking you about wheat supply. I'm not asking you about millets. Now tell me what will happen to millets. Yes, correct, Nathia. Because farmers will produce more millets. So naturally, anyway, farmer have a limited amount of farmland, okay, and they can only produce some amount of crops only. So they will prefer millets. Previously, they used to, sow wheat, produce wheat, but now the wheat commodity is actually less in supply. And if there's something which is less in supply, where will the demand supply curve will shift? Tell me, left or right? Yes, correct, left. Okay, supply curve will be like this. Okay, so basically you have to do everything like that only. Okay, if any question will come from microeconomics, especially with respect to demand and supply at the basic level, it will come in this format only. Now let's see the last thing, which is equilibrium between demand and supply. Okay, so this was our demand curve and this is our onion curve, so supply curve. Okay, and this point is we call equilibrium. What is this point? At this point, quantity demanded is equal to quantity supplied, isn't it? है ना? At this point, quantity demanded on the demand curve, okay, and quantity supplied by the production is actually meeting, is the same. But what is the importance of actually putting out these two graphs on this platform? Because what is the property of equilibrium? At equilibrium, अगर आप equilibrium से किसी भी चीज को remove करेंगे, when you push something apart from equilibrium, they try to go back to that particular equilibrium. Imagine like this bowl, a bowl which have a single ball placed here. At this position, that ball is actually at equilibrium. Okay? But when you push this ball to here, it will naturally move back to this position. When you push this ball to here, this will again come back to this position. So this is the tendency of equilibrium. Same case will happen here also. If, let's say, if the and we are talking about, I will make this with another color, hold on. Okay, let's say if quantity demanded, okay, quantity demanded is higher than the supply, okay, then what will happen? If you break this equilibrium, quantity demanded is higher than quantity supplied, then what will happen? It will cause inflation. And let's say when quantity demanded is less than quantity supplied, then what will happen? Deflation. At this situation, what the government usually do? Try to reduce the demand and keep it at constant. At this position, what does companies do? They try to reduce the supply so that whatever they produce is actually demanded by the consumer.
So nobody likes a situation which is not in equilibrium. Everybody wants कि जितनी demanded हो उतनी supply करें हम लोग, ठीक है? ज़्यादा demand भी नहीं होनी चाहिए because it will increase inflation in the economy. So this is the concept of, you know, demand supply equilibrium. ठीक है? Any confusion in this to anybody? If you have any confusion, please ask. Otherwise, we'll end this session. And from now on, the sessions will continue in the course live class. Okay? But some environment classes I will, whenever I'll start environment, I will take some few classes on YouTube. Okay? But from now on, most of the classes will be there. Okay? So thank you all for joining. Let's meet in the next session, whenever it will be. And thank you for actively participating, everyone. Okay? Thank you.